कर लेंगे. So let's just do that. Uh, I am going to do my eyebrows later today. Just an experiment, just a trial. ऐसे कोई अलग चीज नहीं है. Just an experiment, just a trial. Okay, we'll be using the Wet n Wild concealer in the shade light. Okay, आज मैं थोड़ा सा लाइट कंसीलर यूज कर रही हूँ. Okay. We'll now conceal that. We'll use one more shade, which is my Lakme 9 to 5, all-time favorite. सब जगह पे अच्छे से कंसील कर लेना. Okay. Now we'll set it as usual, जैसे हम usually set करते हैं हमारे eyebrows. We'll take a fluffier brush. Okay, and we'll take a light eyeshadow. We can mix these two. अगर आप कभी भी अपने आई बेस पर क्रिएटिव मेकअप करने वाले हो ना, तो उसको बहुत लाइटली ही सेट करना. ज्यादा हैवी सेट मत करना. उससे क्या होगा कि आपकी जो पूरी लेयर है, जो बेस है, वो पूरा एकदम हैवीली सेट होगा, पूरा पाउडर्ड होगा. एंड कोई भी क्रीम प्रोडक्ट पाउडर पे अगर आप जब वापस अप्लाई करते हो, इट बिकम्स वेरी पैची. सो मेक श्योर आप बहुत लाइटली सेट कर रहे हो जो भी सेट कर. ओके. Now we are going to be doing a very light eye makeup, eye base. So सबसे पहले तो मैं एक transition brush ले रही हूँ. This is Pack 311. I'm taking a very light pink shade. By the way, I'm using the Revolution Forever Flawless palette in Affinity. Okay, and हल्का सा कलर मैं transition area पे दूंगी. So as you can see, एक हल्का सा ट्रांजिशन लग चुका है. बहुत ही हल्का है, बट हल्का ही चाहिए, बिकॉज इसके ऊपर हम जो करेंगे इसके ऊपर करेंगे. Okay. Now that the transition is done, let's switch to another color. Now I'm taking the Mars All I Need makeup kit, and I'm taking this very salmon pink kind of a color. Okay, and applying it all over the eye. फर्स्ट पूरे आंखों पर मैं प्लेस कर रही हूँ उसको अच्छे से. Okay, and now blend it out. सॉफ्ट ब्लेंड होना चाहिए, कुछ भी हार्श लाइंस नहीं आनी चाहिए ऑन द आई.
एंड विदाउट माई आईब्रोज यू कैन सी कि कितना अजीब लग रहा है आई लुक, सो आई नो, बट विल बी डूइंग द आईब्रोज लेटर. ओके, दिस वाज द बेस वी नीडेड. अब हम करेंगे, अब हम इसके ऊपर जो मेन हमारी हार्ट एंड लाइंस एंड सब कुछ बनानी है, हम बनाएंगे. ठीक है. सो नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई angled brush for painting. This is my angled brush. I find my angled brush. That's sorry. Okay. So सबसे पहले तो I'll just clean this. Because last time हमने इससे eyeliner use किया था. I'll just clean, taking some micellar water to it. Put it a little on the cotton pad and this much. Basically. Okay, it's cleaned up. पेंसिल ब्रश के बिना ये हार्ट या जो भी है बनाना ट्राई मत करना. इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. आई एम यूजिंग माई मार्स infinity lip palette and will be using this red color to make the hearts. We can also use this dark pink color, so I feel let's to use. Okay, so I took the paint and now I'm gonna make small random hearts everywhere on that. ओके, सो आपको बस दो लाइंस बनानी है ऐसे. अलग अलग डायरेक्शंस में भी बना सकते हैं. और इसीलिए मैं कह रही थी यू विल नीड अ पेंसिल ब्रश. अगर पेंसिल ब्रश नहीं होता तो बहुत ही डिफिकल्ट है टू मेक सच स्मॉल हैट्स ऑल ओवर द आई. आपको थोड़ा और स्पेस आउट करके बनाना है, आप बना सकते हो. मेक श्योर कि आप प्रोडक्ट ज्यादा ही लो वरना वो ब्लेंड होना चालू हो जाएगा. क्यों?
Good till now. अगेन मैं कुछ बोल नहीं पा रही क्योंकि अगर मैं बोलूंगी तो मेरी आंखें बहुत खिलेंगी, तो आई एम अवॉइडिंग दैट. इजिएस्ट वे ऑफ मेकिंग अ हार्ट इज, आप जो भी पिगमेंट आप ले रहे हो वो अपने हाथ पर लो, मतलब ब्रश पर लो. मेक वन लाइन एंड मेक द अदर लाइन ऑपोजिट. ठीक है, अब इसको यू कैन थोड़ा सा एनहांस करके यू कैन मेक अ प्रिटी हार्ट. ठीक है, सो ऑल यू नीड इज जस्ट वन लाइन एंड देन टू लाइन. एंड अंदर के साइड में छोटे वाले ही बनाऊंगी बिकॉज वो आंखें खुलेंगी तो दिखेगी नहीं. वन लास्ट. यस. नाउ वी आर डन विद द एक सेफ ऑप्शन जो मैं बताना चाहूंगी. ऑलवेज द सेफेस्ट ऑप्शन इज टू ऑलवेज सेट दीज हार्ट्स विद अ लिटिल बिट ऑफ आई शेडो ऑल्सो. ठीक है, क्यों हम ये बोलते हैं? बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो एट टाइम्स ऐसा होता है कि जो कलर्स है वो ब्लीड होना चालू हो जाएगा. आप 10 बार आके ऊपर बंद नीचे करोगे, आर्ट्स जो है वो डिस्पर्स और कलर ब्लेंड होना चालू हो जाएगा बिकॉज दिस आर पिगमेंट्स. ओके, आप लिक्विड लाइनर से नहीं कर रहे हो कुछ भी चीज, तो इट्स ऑलवेज बेटर टू, it's always better to set these eye that the hearts और the cream pigment से आप जो भी यूज कर रहे हो उसको विद पाउडर. अभी मैंने जो रेड कलर यूज किया था, द क्लोजेस्ट इज दिस वन, सो आई विल बी सेटिंग इट विद दिस. I'm taking an angled brush. ओके, एंड उसके टिप से बस आई शेडो पिकअप करो. ओके, एंड आई विल सेट ऑल ऑफ दिस द सेम वे. कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वे. बस मेक श्योर आप, अगर आपके पास और एक पतला ब्रश है तो बेटर, वरना आप किसी भी एंगल ब्रश के टिप से कर लेना. Okay, so all the hearts you can see are more enhanced also.
एंड बहुत अच्छे से सेट हो गया। अब मैं थोड़ा सा वाइट पिगमेंट लूंगी एंड वाइट पिगमेंट से आई एम गोना मेक सम क्यूट डॉट्स in between. So I will use the same brush, the red color brush. Okay. And we'll use the white pigment to make few dots in between. बहुत ही स्पेशियसली बनाना, ज्यादा क्लटर मत करना। जहां पे भी मैंने व्हाइट किया है वहां पे आप कोई भी डायमंड भी लगा सकते हो, बट दिस इज लाइक मोर देन इनफ। ठीक है। अब आपको लाइनर लगाना है तो आप लाइनर भी लगा सकते हो, कंप्लीटली योर चॉइस। वी विल डू अ लाइनर, अ वेरी 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 पतला लाइनर लिक्विड लिपस्टिक से, लिक्विड लाइनर से। सो आई एम टेकिंग द लैक्मे इंस्टा लाइनर एंड बहुत ही पतला, बस टाइट लाइनिंग करूंगी हमारे आंखों को। एंड यू कैन सी बिकॉज ऑफ द आई शेडो बेस वी अप्लाइड द कलर्स आर पॉपिंग मोर। अगर आप आई शेडो बेस नहीं लगाओगे, लाइक द कलर, द पिंक कलर विच वी ब्लेंडेड, तो ये बहुत ही खाली खाली लगेगा, यानी ये इतना उठ के नहीं आए। ओके। बहुत ही पतला लाइनर, जैसे आप देख सकते हो कि बस टाइट लाइन किया है आंखों को और कुछ नहीं किया। एंड विल क्लीन द एक्सेस, बिकॉज जस्ट बिकॉज मैंने उतना पतला eyeliner लगाया है, it's also a little on the downside. Okay, अंडर आई क्लीन होने के बाद वी विल ऑल्सो अप्लाई some concealer as a eye shadow. Let's apply the darker concealer which I have. So let's apply medium tonic by Wet n White. हल्का सा बस, just enough to conceal that area. I will be using my fingers only to blend. एक और बात है कि जब तक आप पूरा आई मेकअप या पूरा बेस सब कुछ नहीं करते, आपका आई लुक बहुत ही अजीब दिखेगा। सो मेक श्योर द फिनिशिंग इज देयर ऑलवेज
एंड सब कुछ करने के बाद यू आर डूइंग लाइक ग्रेट. Okay, we'll quickly set this as well. Okay, now that your under eye will look something like this once everything is blended and set. Once everything is blended and set and everything. अब हम हमारी lower lash line भी करेंगे. So for lower lash line, we are going to take the darkest pink color which we applied on the heart, and we'll softly apply and smoke it. अब देख रहे हो मैं मेरी कितनी भी आंखें ऊपर नीचे हिल रही है. द हार्ट्स आर इंटैक्ट दैट वे. तो वही एक जो मैं बताना चाह रही थी आपको कि अगर आप सिर्फ उसको पिगमेंट के इसमें छोड़ देते देन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता. नाउ आई एम गोइंग टू टेक दिस नियॉन पिंकिश कलर एंड विल स्मोक आउट इवन मोर. Okay, so this is the look. I will apply a little bit of mascara using the Blue Heaven Lash Twist Curling Mascara. Okay, lower lash line का mascara मत करो. So this is the hard eye makeup look. Again, हमारी eyebrows बाकी है. So let's just quickly fill in the eyebrows. Okay. For eyebrows, I am using my palette only. And मैं black तो बिल्कुल नहीं ले रही. I'm taking a dark ashy brownish shade. और now after the thing, I know कि मुझे कहाँ तक मेरा eyebrow चाहिए. कि अगर मैं पहले ही उसको एकदम नीचे तक लेके आ जाती तो मेरा लुक आई मेकअप जो है उसको इतनी स्पेस नहीं मिलती. एंड नाउ यू कैन सी द डिफरेंस. जब तक आप आईब्राउ नहीं करोगे इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज गोइंग टू लुक वेरी वियर्ड. ओके, एंड आई हैव डन माय आईब्राउज प्रिटी सॉफ्ट टुडे. वरना मैं इससे थोड़े से इंटेंस करती हूँ. बट अगर आपको आईब्राउ पहले करना है तो यू कैन ऑलवेज डू दैट एंड यू कैन ऑल्सो क्लीन दिस पार्ट. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, this is the heart's makeup look. So let me tell you where all you can wear this eye makeup look. Definitely not in a party. A color theme makeup party, yes. A cosplay, yes. अगर आपको किसी को सिखाना है then definitely. अगर आप चाहते हो कि if you want to do it on your kids, अगर कुछ
themed party है, or if you know someone is doing so, definitely definitely you can definitely you can do this. Okay. And hearts अगर आप एक शेप पे करोगे ना, then it will look like a print. Rather we want the hearts to look कि मतलब वो सब जगह पे ऐसे स्प्लैश हुआ है, चिपक गए. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि हार्ट्स जो है वो सब जगह पे दे आर apply. You can always apply some lash to this, but make sure you have used something which is very light, because अगर आपने बहुत ही फ्लटरी लैश यूज कर ली तो हार्ट्स नहीं दिखेंगे अच्छे से. इतना पार्ट तो आपका लैश में ही चुप जाएगा. ओके. सो आई जस्ट वापस मैं स्टार्ट करती हूँ फ्रॉम द स्टार्ट. इफ समवन इज जॉइनिंग नाउ दे कैन लर्न एंड दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वेंट थ्रू. सो सबसे पहले मैंने मेरा आई बेस किया, which I used my Lakme 9 to 5 Primer Plus Matte Concealer in the shade 20 Nude. Okay. उसको मैंने अच्छे से blend कर लिया on the entire eye, and I set it with a very skin-like color, which it is always available in your eyeshadow palette. So I used this colors. Okay, these two colors. After that अच्छे से सेट करने के बाद I made sure कि मैंने जो पाउडर है वो ज्यादा नहीं लगाई है to set, because we have to paint something on it. So make sure that आप बहुत ही lightly set करते हो ऐसे occasions पे. सेट करने के बाद I've used a very 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 light pink kind of a color to on my transition area, just to blend out and give it a very nice transition. उसके बाद मैंने लिया है एक पिंक salmon color, like so, and I've applied it on the entire eye and blended it out. So from far behind, you don't see the color, you see the heart, but in reality, the base is like a very nice pink spreaded eyeshadow, which is giving the heart its heart. Okay, so वो पिंक कलर से मैंने बहुत ही अच्छे से ब्लेंड किया, applied it all over the eye, and I've blended it nicely, for which I've used a blending brush. ओके. अब ब्लेंडिंग ब्रश, अगर यही चीज अगर जो मैंने दिखाई है अभी, यही चीज अगर आप ऐसे ब्रश से करोगे तो नहीं होगा. सो डोंट, इफ यू वांट दिस वेरी सॉफ्ट ब्लेंडेड काइंड ऑफ फील, ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज ब्लेंडिंग ब्रशेस. ओके. वो ब्लेंड करने के बाद देन वी स्टार्टेड विद पेंटिंग द हार्ट्स. सो आई हैव टुक द Mars Infinity lip palette, and I've not used red, because the red was like too red. Okay, so I used something which is a little darker in the pink side. So we have used this color. And एक पेंसिल ब्रश से मैंने हार्ट्स बनाए. हार्ट्स बनाने की टेक्निक बहुत ही इजी है. अब मैं व्हाइट से बनाऊंगी, बिकॉज मेरा पेंट ब्रश जो है वो व्हाइट में डूबा हुआ है. सो द हार्ट बनाने की टेक्निक इज मेक वन स्ट्रोक एंड मेक द अदर स्ट्रोक, एंड देन उसको फिर अच्छे से एक पॉइंट पे मीट करा, एंड here you are. Here you are. Okay, so बहुत ही easily बनते हैं हार्ट्स. You can make white hearts also, but कोई भी आई शेडो के ऊपर आप व्हाइट पिगमेंट यूज करने की कोशिश करोगे तो इट विल स्टार्ट ब्लेंडिंग एंड इट विल बिकम दैट कलर. सो अवॉइड डूइंग दैट. यूज ऑलवेज डार्क कलर्स. आप काले दिल बना लो, चल जाएगा, बट नॉट व्हाइट हार्ट्स. And then you will be like, the color is blending, the color is not standing out, so that's not my problem. ठीक है. तो मैंने हाथ बनाने चालू किए. मैंने बहुत ही आड़े टेढ़े अलग अलग शेप्स पे आई हैव ट्राइड, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एंड आड़े टेढ़े एंगल्स पे बनाया है मैंने. सीधे सीधे नहीं बनाया, अदरवाइज इट विल लुक लाइक अ प्रिंट. Once that was done, I used some eyeshadow which was similar color, and मैंने eyebrow brush के tip से, you can see how much I used. ओके, टिप से उसको अच्छे से सेट करने की कोशिश की. Why? Because it's a pigment, it's going to be oil based, cream based. तो अगर आप ज्यादा आंखें ऊपर नीचे करोगे, it's the tendency is to start smudging. ठीक है, तो जिसके वजह से it doesn't look good. So I just, for a safer side, set it with the tip of the eyebrow brush. वो होने के बाद I've just took some white paint from that same palette,
एंड आई स्टार्टेड मेकिंग डॉट्स ऑल ओवर. ज्यादा ज्यादा क्राउडेड नहीं किया मैंने, जहां मुझे स्पेस दिखी वहां पर मैंने अप्लाई करने की कोशिश की फ्रॉम द सेम पेंसिल ब्रश. Okay, and once that was done, I completed it with a very very thin liner. Very thin liner, because अगर आपने फिर इस पे मोटा eyeliner कर दिया तो आपकी मेहनत पूरी पानी में चली गई. Applied a thin liner, applied a darker shade which I used to seal the hearts on the lower lash line, and smudged it out with a little bit of neon pink. So as you can see, but उसके पहले मैंने conceal किया मेरे under eye को, because if you can see the difference. Okay. After that, I applied a little bit of mascara, and मैंने सबसे end में आज मेरी eyebrows की है. So you can see it's a very very soft eyebrow. अगर आप मेरे live sessions every day, मतलब जितने भी मेरे live sessions if you attend them, you might know that the eyebrow is very very soft today. So that's about it. That's today's look. Special hearts eye makeup. You can always do it just to try for your content on Instagram or any other social media platform, for your cosplays, for your love themed Valentine's themed party. If it doesn't look too much, because you cannot dance and everything, and it'll start rubbing off. Otherwise, आप normally ये makeup नहीं कर सकते. So that's it for today's session. I will meet you in the next one, which is again will be a Valentine look. But for today, we are done, and I hope you liked this session. So bye bye.